कल मैं फ्रेंड से मिली, मूड थोड़ा ऑफ था। उसे ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है। आई सिंपली सेड, यार एक ही दिन में 1 लाख रुपीज का सेल किया। और कुछ आगे बोलूं उससे पहले ही उसने मेरी बात को काट के बोला, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट, दैट्स सो ग्रेट, लेट्स सेलिब्रेट, चल पार्टी करते हैं। मैंने बोला रुक जा, 1 लाख का सेल किया है, 1 लाख का प्रॉफिट नहीं। 1 लाख का सेल 5,000 के लॉस के साथ करा और उसके चक्कर में मैंने 1,20,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर ली और तुझे पार्टी चाहिए। सो माई फ्रेंड वॉज कंफ्यूज्ड। Same confusion you also might be having with regard to terms like sales, profit, revenue, income and all such things. These are the terms जो हम normal language में interchangeably use करते हैं, but as far as accounts is concerned इन सब के technically different meaning है. In today's session we will be cracking all the technical meaning of all such terms. Hello everyone and welcome back to the commerce element. Let's start the session with the first term, revenue. Revenue is nothing but a business's regular natured earning. जो भी आपका डे टू डे रेगुलर नेचर रूटीन नेचर का अर्निंग है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू. एज सच एज अ बिजनेस आपको रूटीन नेचर का अर्निंग किससे होगा? आपको रूटीन नेचर का अर्निंग सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होगा. एंड दस सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी आपको अर्निंग्स होता है, दैट अर्निंग इज नोन एज रेवेन्यू. द सेकंड टर्म इज एक्सपेंस. रेगुलर नेचर का अर्निंग, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़े, दैट अमाउंट स्पेंड इज नोन एज एक्सपेंस. एंड thus expense also will be something which you spend on regular basis. सपोज सेल्स करके अर्निंग अर्न करने के लिए पहले तो आपको गुड्स परचेज करने पड़ेंगे. सो परचेज पे जो भी अमाउंट स्पेंड करते हो, दैट इज योर एक्सपेंस. सपोज सेल्स करने के लिए मे बी आपने शॉप रेंट पे लिया है एंड आपको एवरी मंथ उसका रेंट पे करना पड़ता है. सो अमाउंट दैट यू स्पेंड ऑन पेइंग रेंट इज योर एक्सपेंस. एंड लाइक दिस all your routine nature spending, all your regular nature spending that you do to earn revenue from sales is nothing but expense. So as such you can take purchase as your expense, you can take the rent you are paying as your expense, you can take your employees salary as an expense and so on. And all these, remember that when we talk of expense, these are of routine nature spending. Coming to the most favorite word of any businessman, profit. Profit is nothing but when your revenue is greater than your expense, the resultant figure will be profit. If my revenue is, say suppose 1,000 rupees and my expense is 700 rupees, then the difference between 1,000 and 700, 300 will be my profit. Opposite to that, loss is when your revenue is less than your expense. Suppose my revenue is 1,000 and my expense instead of 700, if it is 1,700, then the difference between my revenue of 1,000 and an expense of 1,700, 700 is my loss. So profit is something which you will enjoy if your revenue is more comparison to your expense, and loss is something that you will suffer if your revenue is lesser than your expense. Moving to another term, that is income. Now income is very broad in nature. You can take this bigger circle as income. Income will include revenue within it, which is your routine nature, regular natured earning. Income will also include your irregular natured earnings as well. Irregular natured earnings बोले तो मे बी द मशीन विच आई एम यूजिंग, अब वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, मैंने उसको सेल कर दिया. रोज रोज आई डोंट सेल दी मशीन, रोज रोज मशीन को सेल करके आई डोंट अर्न एनी अमाउंट एज वेल.
वंस अपॉन अ टाइम मशीन सेल कर दिया एंड मशीन सेल करके मुझे 50,000 रुपीज मिला, तो that 50,000 is my irregular natured earning, and irregular natured earning also will be a part of income, and your income will also include profit as well. So income, when we say, it is a very broad, a very big term which will be including your regular natured earning, that is your revenue, your irregular natured earnings as well, that is the amount which you earn sometimes. Once upon a while, 2 4 5 years में जो भी amount आप earn करते हो, not out of your routine natured actions, then that is irregular natured earning, and your profit. So all three of them, a bigger figure makes income. Moving on to expenditure. Many times the students have confusion that expense and expenditure are similar terms, but no, they are not similar. Expense is something which you spend on regular basis, and opposite to that, expenditure is an amount that you spend on irregular basis. Once upon a time वाला basis पे आप जो भी amount spend करते हो, that amount is your expenditure. अब once upon a time 2 4 5 साल में हम किस चीज में amount spend करेंगे, हम जिस चीज पे amount spend करेंगे, that will be in purchase of fixed assets. And thus expenditure matlab the amount that your business is spending for the purchase of fixed assets. 2 4 5 साल में once upon a time एक आध बार fixed asset purchase कर लिया, एक आध बार मे बी फर्नीचर परचेज किया, मे बी आपने मशीन परचेज किया, प्लांट परचेज किया, उस पे जो भी अमाउंट स्पेंड किया, दैट अमाउंट इज योर एक्सपेंडिचर. I hope that all these terms so far discussed are clear to you. Now moving on to liability. Liability is an amount that your business is supposed to pay to somebody. तो आपके बिजनेस के लिए जो भी पेएबल अमाउंट है, जो अब तक आपने पे नहीं किया बट पे करना बनता तो है, then that amount payable is nothing but its liability of the business. Now liability can be of 4 types. The liability can be current liability. ऐसी liability जो आपको within 1 year के टाइम स्पैन में पे करनी है, then that liability is known as current liability, which is to be paid in a time span of less than 1 year. नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो करंट नहीं है, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 1 ईयर से ज्यादा के टाइम स्पैन में पे करनी है, देन ऑल सच लाइबिलिटीज आर योर नॉन करंट लाइबिलिटी. सो द अमाउंट्स दैट आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर are considered as your non-current liability. Again, the liability can be internal, it can be external liability also. Internal liability मतलब जो आपके बिजनेस को आप ही के बिजनेस के अंदर अंदर पे करनी है. तो आपके बिजनेस को आप ही के बिजनेस के अंदर अंदर कौन सी लाइबिलिटी पे करनी होगी? इट इज सिंपली द लाइबिलिटी ऑफ कैपिटल दैट यू आर सपोज टू पे बैक टू द ओनर. बिकॉज आप जब अकाउंट्स लिखते हो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंड बिजनेस ओनर, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, एंड दस ओनर ने जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इट बिकम्स बिजनेस की लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर कि वो कैपिटल अमाउंट उसे कभी ना कभी वापस दे. दैट अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस टू द ओनर ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ. And thus that liability arising out of capital is internal liability. And opposite to that, external liability matlab the amount that the business is supposed to pay to any outsider. बाहर वालों को जो भी amount pay करना है, that liability is your external liability. If you take the example of current liability, then your creditors are your current liability. आप जिनसे भी उधार माल लेते हो, they will give you the credit period of 15 days, 1 month, 2 month, 3 month like that. तो वो पैसे आप लेस देन 1 ईयर के टाइम स्पैन में रीपे बैक करोगे, एंड दस क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी हुए.
Same way, bills payable also can be your current liability. नॉन करंट लाइबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर के बाद पे करनी है, तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक लोन. 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की बैंक लोन ली, thus that amount of bank loan is nothing but your non current liability. इंटरनल लाइबिलिटी में ओनली एंड ओनली कैपिटल विल अपीयर. उसके सिवा जो भी बिजनेस की लाइबिलिटी है, दे आर ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. मे दैट एक्सटर्नल लाइबिलिटी बी करंट और नॉन करंट, डजंट मैटर. कैपिटल के सिवा जो भी अमाउंट पेएबल है, दैट ऑल अमाउंट्स आर योर बिजनेसेस एक्सटर्नल लाइबिलिटी. आई होप इवन दिस इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू अनदर टर्म, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स की वैल्यू उसकी लाइबिलिटीज की वैल्यू से ज्यादा है. इफ अ पर्सन इज हैविंग से सपोज 10 लाख रुपीज के एसेट्स एंड ऑपोजिट टू दैट अ पर्सन इज सपोज टू पे 6 लाख की लाइबिलिटी, तो वो पर्सन अपनी 6 लाख की लाइबिलिटी सक्सेसफुली पे कर पाएगा, उसके बाद भी उसके पास एसेट्स सरप्लस बचेंगे. then that person is said to be a solvent person, जो अपनी liability पे कर सके उतने assets carry करता है. Opposite to that, insolvent person is someone जिसके assets की value उसके liabilities की value के comparison में कम है. The person is having 10 lakh के assets and the person is having 16 lakh की liabilities. देन 16 लाख की लाइबिलिटीज पे करने के लिए अगर वो 10 लाख के सारे एसेट सेल भी कर देता है, स्टिल दैट पर्सन वोंट बी एबल टू रीपे द लाइबिलिटी ऑफ 16, एंड thus that person in accounting terms will be known as insolvent person. And the last term is voucher. Voucher is nothing but documentary proof based on which the entries are recorded in books of accounts. नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी कभी एंट्री होती है, दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, सम एविडेंस विच इज नोन एज वाउचर. आप नॉर्मल लैंग्वेज में उसको फिलहाल बिल समझ सकते हो, बाकी आगे जाके वाउचर पे आपको पूरा चैप्टर है. एट दैट टाइम वी विल स्टडी वाउचर्स इन डिटेल. नाउ आई होप वॉट एवर टर्म्स वी डिस्कस टूडे आर वेरी मच क्लियर टू यू. एंड इन द अपकमिंग सेशन we will be discussing ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स 3 डिफरेंट सेशंस में क्लियर करी, वो सारी अकाउंटिंग टर्म्स में से किस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. सो अंटिल द नेक्स्ट सेशन, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय.